Hello students, good morning. Students, as today your notebook checking is there, so it is not possible to conduct a lecture because many of the students will be visiting school, and if I take a lecture at that time, they will miss the lecture. So I am sending a video on our fourth chapter, on our last point, which was remaining to teach in last lecture. On that point, I'm teaching that point in this video. You all, I hope that you all will see the video carefully and will understand the point that I am going to teach you. So during lecture last time we were learning how to create a simple visual basic application in Visual Basic. This thing I was teaching you, half of the part I have covered from this. Okay, so now what we are going to do, we are going to just we I'm going to explain you that part once again from the beginning. I have covered half part, but I am going to explain half part again from beginning, so you will understand it in a better way. Okay, so here, this one is a Visual Basic application. It's getting open. It's open now. Now what we want to do, as I told you earlier, first thing, for creating a new project, what we have to do, we have to open a project. But last time we have saved a project. मैंने बोला था कि उसी को सेव करते हैं और उसी को हम बाद में ओपन करके उसी के अंदर काम करेंगे. पर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, या कोई प्रॉब्लम होगी, या मैं अभी बीच में से फिर से एक्सप्लेन करूँगी. आधा पार्ट पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आधा अभी करूँगी, तो समझ में नहीं आएगा. For that purpose, I am explaining you once again that how to create a simple Visual Basic application, how to create a simple Visual Basic application. I am explaining this point once again from the beginning, so everyone watch this video very carefully. After this, there should not if doubts arises towards you, you can call me and ask me that ma'am, these are the doubts that have arise when we were watching video, but only doubts related to Visual Basic programming, not other topics. Okay, so let's go. Now I am clicking on new project because I want to create my form. I want to create my small application. After that, click on Windows Form application and say okay, just it's getting loaded. Just hold on for a while. Now it's open. Okay, now what I am going to do, I am again going to here, I am going to take labels, buttons, as we have taken last time. Same thing, I am in the same way I am going to place here labels, text box and buttons once again. So let's go. Okay, first I will take label because I want to place here name. So I came on toolbox. This one is a toolbox. I am moving it. I want a label name as a name. I want a label as a name. So I have taken here label. Okay, now I want to give name to the label. I want to give name, N-A-M-E, name, this word to the label. So how can I give that? Just go in properties. Go in properties window. After going in properties window, here you find text. In front of it there is written label 1. What is written? Label 1. Select that, and after selecting that, whatever you want instead of label 1, give that name and press enter key. So you can see that as I press enter key, my name of a label is changed. Okay, now in the same way I want another label. I want another label. I want another label for subject. As I told you last time that we are going to calculate the result of a student. So we are creating a result over here. Same thing I am doing that I did last week. Just after name, I have taken here label 2. That this label is for subject. Like I am giving here name as English, and here I have pressed enter. I have given name as English and I have pressed enter by going in property window. After that, again I am coming here. I will go in toolbox. I want another label for another subject. I have taken here label again. I have clicked on a label.
I'm going on my form and I have placed my label over here. If you want, you can adjust your label as well, like I am adjusting over here. When I come on a label, it shows me that four-sided arrow. Okay, and if you want to increase the form size, just here you can see a box, increase the size from here. If you want to increase from down, you can increase the size. Now I want to change the name of a label, so I have clicked over here. I'm going in property window of a label, and here it is label 3 in a text. I am giving here label name as a computer. Okay, and I am pressing enter. After this, now two subjects are sufficient, or else I will give one more subject over here. Okay, I will take another label and I will give here subject as I will place it over here. I am adjusting it. Okay, and this one is the label. I am giving here name to the label as science. Okay, and pressing enter. Now here I given name, I have given subjects, but when we create a result, it is compulsory that we have to mention roll number of a student as well. What you have to mention? Roll number of a student. For mentioning roll number of a student, what we will need? We will require a one more label, which will contain what? Which will contain roll number, which will contain roll number of a student, which will have a roll number of a student. So after placing the label in a form, what I am doing, I came in the property window of label 5, and here in text I am giving name to the label as roll number, I am pressing enter. Now here I have placed all the labels. Now it's time to place the text box in front of label. Text box मुझे कहाँ place करना अभी? In front of label. So where is my text box? Just go in toolbox and come down with the help of scroll bar, and here you will find text box. Click over it. After clicking over it, just go in front of a label where you want to place a text box and click over there. In the same way, again go in a text box, again go in a toolbox, click on a text box, select text box and place it in front of the label, Same way, again text box, go in front of a label where you want to place a text box, adjust it accurately like I am adjusting it over here. Just go over text box. You will find four-sided arrow. With the help of that arrow, by using left mouse button, you can adjust your text box. Again I am going in toolbox, selecting text box, and I am placing my text box in front of science subject. Same way I am taking another text box and placing my text box in front of computer subject. Okay, now next thing is that for result what we require the total marks of the student. Just we don't require the individual subject. With individual subject marks we need total marks of the student as well. क्या लगता है हमें? total marks of the students as well. तो total marks के लिए, total calculate करने के लिए हमें क्या लगेगा? total नाम का बटन लगेगा. कौन सा लगेगा? total नाम का बटन. For that, go in toolbox, select a button. After selecting a button, place a button on your form. After placing a button on your form, go on button 1. Okay, in button 1, here what you have to do, go in properties. Here you will find that this property window is of button 1. Come below here in text section, instead of button 1, give name to the button as total. And press enter. Okay, now whenever you will click on total, your marks should be displayed in a text box. So come below, click on a text box and place here text box. After placing text box over here, what you do? After this you will require a percentage. What you need? You will need percentage, क्योंकि रिजल्ट कब फाइनलाइज होता है? जब आप परसेंटेज में आपका रिजल्ट फाइनलाइज होता है. सो क्लिक अगेन ऑन अ बटन, place another button over here. After placing a button, go in a property window of button 2, go in text,
and here give name to the button as percentage. Okay, and press enter. Okay, now for percentage also we will need text box. What we will require? Text box. So go in toolbox, select text box and place here text box. Okay, now after this the last button we will require will be exit button. हमें बाहर निकलना है इस फॉर्म से, तो हमें कौन सा लगेगा बटन? exit बटन लगेगा. कौन सा लगेगा? exit बटन. So here I have placed, here I have taken third button, that is a button number 3. I want to change its names. Go in a property window of button 3 and here change the name of a button to exit. Exit and press enter. Now your form designing is over. Now your form designing is over. Now what you have to do? You have to calculate the total marks. You have to calculate the total marks of the student. तो उसके लिए क्या करना होगा ना, ये टोटल वाला बटन दिख रहा है ना, तो कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. तो यहाँ पे कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, मैंने आपको क्या बोला, ये यहाँ पे हम फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, बट फॉर्म की जो कोडिंग है, फॉर्म के लिए जो कोड लिखते हैं हम लोग, वो कौन से विंडो में दिखते हैं? कोड विंडो. तो उसके लिए ये जो बटन है ना टोटल वाला, आपको कोड विंडो में जाने के लिए ये टोटल बटन के ऊपर क्या करना होगा? डबल क्लिक करना होगा. यू हैव टू डबल क्लिक ओवर दिस टोटल विंडो. आई हैव डबल क्लिक्ड ओवर हियर. As I double clicked over here, my form coding window got open. Coding window is visible, it got open. Now what I want to do here, some code is ऑलरेडी अवेलेबल फॉर मी. मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालना है टू कैलकुलेट, टू ऐड और मार्क्स ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट एंड इंसर्ट देयर रिजल्ट इन टोटल बॉक्स. टोटल वाला जो है वहाँ पे इंसर्ट क्या करना है? रिजल्ट इंसर्ट करना है. तो क्या किया, जो टोटल नाम का बटन था उसके ऊपर डबल क्लिक किया और हम क्या हो गए? वी केम इन कोडिंग विंडो. अभी यहाँ पे ये ऑलरेडी रेडीमेड कोड है, उसके अलावा हमें कौन सा कोड लिखना है यहाँ पे? तो टेक्स्ट टोटल. आई हैव एक्सप्लेन दिस कोड लास्ट टाइम. मैंने समझाया था यहाँ पे हर एक चीज़ क्यों ली है. एक और बार शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. सो वॉच इट केयरफुली. Okay, so here what I have given, here I have taken txt text total means what? वो क्या बोल रहा है कि ये जो है txt total, इसके अंदर क्या आने वाला है? टेक्स्ट आने वाला है. क्या आने वाला है? टेक्स्ट आने वाला है. कौन सा टेक्स्ट आने वाला है? जो इन सब का एडिशन होगा, इंग्लिश के मार्क्स प्लस कंप्यूटर के मार्क्स प्लस साइंस के मार्क्स, इनका जो भी कैलकुलेशन होगा उसका रिजल्ट किसके अंदर आने वाला है? इसके अंदर आने वाला है. आफ्टर दैट हियर VAL मीन्स वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ वैल्यू. मतलब नंबर देने वाले हैं, जो कि किसके फॉर्म में रहेगा? टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा. किसके फॉर्म में रहेगा? टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा. तो कौन से सब्जेक्ट का रहेगा वो? इंग्लिश सब्जेक्ट का. कौन सा? इंग्लिश. मतलब ये कौन से टेक्स्ट बॉक्स का है? इंग्लिश टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्या देने वाले? टेक्स्ट देने वाले. किसके फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में. सेम वे में हम कंप्यूटर के टेक्स्ट बॉक्स में क्या देने वाले हैं? वी आर गोइंग टू गिव अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू मीन्स अ नंबर. सेम वे इन द साइंस टेक्स्ट बॉक्स,
टेक्स्ट, यस, इन साइंस टेक्स्ट बॉक्स, जो साइंस के बारे में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर भी हम क्या देने वाले, वी आर गोइंग टू गिव हियर नंबर इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू, मीन्स इन द form of numerical value, and what will happen, whatever numbers we will give at the time, at run time, उन सब का आउटपुट कहाँ स्टोर होगा, इन दिस टोटल टेक्स्ट बॉक्स, इन दिस टोटल टेक्स्ट बॉक्स। टोटल टेक्स्ट बॉक्स मतलब ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, टोटल टेक्स्ट बॉक्स मतलब ये टोटल बटन के बाजू वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सो this much is the coding which we require to calculate a total. Now next thing is what, you want percentage, you want percentage. For percentage, what you have to do, again you have to go in a design window, again you have to click on a design window. After clicking on design window, now you want to calculate a percentage. तो simply क्या करो ना, after coming on a design window, come on percentage button and double click over here, so that here what will happen, you will get a percentage coding window, you will get a percentage coding window. परसेंटेज कोडिंग विंडो मिलने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट हियर टाइप txt text, txt text, percentag, percentage dot text. Okay, after this just equal to pal value, and वैल्यू किसका चाहिए, कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, लाइक txt text total dot txt text, okay, and slash सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके, तो ये हमारा ये क्या हो गया, अनदर कोडिंग हो गया। तो अभी आपको ये कैसे होने वाला है ना, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। लेट्स गो इन अ विंडो, यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन किया है फॉर रफ वर्क। तो ये कैसे होगा ना, ये जो पहला कोडिंग है ना, ये वाला कोडिंग, इसका कैसे आएगा कि जैसे हमने यहाँ पे दे दिया टोटल, टोटल दिया, टोटल इक्वल टू इंग्लिश प्लस कंप्यूटर प्लस साइंस, मतलब क्या होगा, जो भी मार्क्स होंगे, ओके, जो भी मार्क्स होंगे इंग्लिश के, ओके, जो भी इंग्लिश के मार्क्स है, लाइक हियर आई विल प्रेस एंटर की, यहाँ से टैब से इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, सपोज 34, तो ये क्या हो गए, ऐड होंगे। फिर कंप्यूटर के मार्क्स कितने हैं, 45, ये क्या होंगे, ऐड होंगे। साइंस के कितने हैं, 56, ये क्या होंगे, ऐड होंगे। 34 प्लस 45 प्लस 56, जो भी रिजल्ट आएगा उसका आंसर कहाँ पे जाएगा, इस टोटल वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही ये भी वर्क करता है। नाउ आफ्टर दिस हाउ वी कैलकुलेट अ परसेंटेज, हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे टोटल 50-50 दे देती हूँ, मतलब मुझे ईजी हो जाएगा। सो इट्स 150 हो जाता है। तो परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल, वॉट एवर द टोटल इज, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट परसेंटेज, मीन्स 150 डिवाइड बाय 3, एंड वॉट एवर विल बी द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनसाइड अ परसेंटेज वेरिएबल। तो यही होता है यहाँ पे, यही होता है यहाँ पे। जस्ट रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, इट इज डिफरेंट, रिटर्न स्टेटमेंट इज डिफरेंट। लाइक हियर आई हैव गिवन txt text percentage dot text, means percentage is a variable in which we have to store a, in which the value will be stored which will be divided by a total, टोटल मतलब जो भी टोटल डिवाइड बाय 3 से जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। पर कहाँ स्टोर होगी, इन द टेक्स्ट बॉक्स, इन द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ अ परसेंटेज बटन, इन द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ अ परसेंटेज बटन। इसके बाद क्या होगा ना, ये कैसे कैलकुलेट करेगा, तो मैंने आपको अभी समझाया कि टोटल नाम का क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एक बटन है जिसके बाजू में क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर टोटल आने वाली है। तो वो टोटल जो भी यहाँ पे आएगी, जो भी एडिशन होगी यहाँ पे टोटल आएगी, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, बाय 3। अभी यहाँ पे VLQ है, सेम यहाँ पे VLQ है कि टोटल नाम का क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है। टोटल नाम का क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर टेक्स्ट जाने वाला है, टेक्स्ट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जाने वाली है, इसलिए हमने VL लिया है जो कि वैल्यू है, नंबर है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इसलिए यहाँ पे VL लिया है।
तो ये जो है कंप्लीट, मतलब ये जो टोटल है, टोटल वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, बाय 3। बाय 3 क्यों, यहाँ पे सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 and 3। ओके, तो इस तरह क्या होगा, आपका परसेंटेज और टोटल क्या होगी, अवेलेबल हमें हो जाएगी। इन दिस वे योर टोटल विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर स्क्रीन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी हमने टोटल बटन्स कितने लिए हैं इन आवर फॉर्म, वी आर टेकन 3 बटन्स। कितने बटन्स लिए, 3 बटन्स। अभी 3 बटन लिए हैं तो हमने 2 बटन पे ही कोडिंग की है, थर्ड बटन पे भी करना है। तो क्या कीजिए, अगेन गो इन डिज़ाइन, अगेन गो इन फॉर्म डिज़ाइन। आफ्टर गोइंग इन फॉर्म डिज़ाइन, क्लिक ऑन द थर्ड बटन, दैट वन इज exit. Click on the third button, that one is exit. After clicking on third button, what you have to do, just here write end, right here end, end, end means your statement is over. Okay, right here end. Okay, after writing this, simply what you have to do, you have to save this project, you have to save this project. So you can save this project by going in file and click on save form, or the second way is use shortcut key Ctrl S, like always. Okay, like always, like I will go in file and click on, I think it's already saved, on save, click on save all, click on save all. After clicking on save all, you give name to the form as student result. I am giving name what you have to do, you don't have to click on save, you don't have to click on save form, you have to click on save all, you have to click on save all. After clicking on save all, click on here, give name to the form, give name to your project. This one is a small project, give name to your project, as I am giving here name to the project as students result. I am giving name to the project as students result, and click on save. After clicking on save, your project is being saved, your project is saved. Okay, after your projects get saved, now next thing is what, that you have to run this program, run this program. So how you can run this program, the first way or the shortcut way to run this program is that you have to, here you can see start debugging, click on here, click, this one is a green arrow, click on here and your program will run. And another one is click on debug in menu bar, go in debug menu, click on start debugging. Or the third way is you can use shortcut key, that is F5, use shortcut key F5. तो यहाँ से 3 तरीके से कर सकते हैं. debug means what, कि आप प्रोग्राम को रनिंग प्रोसेस में ला रहे हो. what is the meaning of debugging, means you are going to run your program. So first way is to go in a menu bar and run your program. Second way is you can click on here over here, and third way is you can use shortcut key, that one is F5. I'm clicking on the save form 1.vb as, go in form 1.vb as. After going here, what you have to do, wherever you want to save your form, like I want to save my form on desktop, I want to save my form on desktop. So what I am going to do over here, instead of giving name form 1, instead of giving form 1 to the project, I am giving here name as student form, I am giving here name as student form, and click on save. After clicking on save, okay, your form is now saved, your form is now saved. Now what I want to do, so now it's time to run a program. So for running a program, I told you that there are 3 ways to run a program. I'm clicking on this arrow to run a program. Click on the arrow. After clicking on arrow, first thing, as I clicked on an arrow, you can see that whatever I have done in a design view, it is visible over here. This one is the output of a form. Okay, ये क्या था, सब हमने इनपुट दिया, डिज़ाइन किया, फिर उसका ये यहाँ पे कोडिंग किया, कोडिंग विंडो के अंदर जाके, उसके बाद क्या किया, कोडिंग करने के बाद फॉर्म को सेव किया, सेव करने के बाद आई रन इट बाय यूजिंग दिस arrow, and the output got displayed near me. Now what I am doing here, I am just typing my name here. I will give some roll number. Here I will give marks, English, science, and computer. Okay, now what I want to do, or I will give here some simple marks, like I will give here 50 50 50, means total will be 150. Okay,
So here 50 and total. So here you can see as I clicked after inserting a marks I have clicked on a total button. तो क्या किया इसने 150 इसने क्या लिया इनपुट लिया. कैसे लिया? So come over here this one is my form. तो इसने क्या किया ये जो था इसका this 50 here it has taken 50 here it has taken 50 इन सब का एडिशन करके रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ इसके अंदर. मतलब कहाँ हुआ ये टोटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो बटन के पास है इसके ऊपर हमने कोडिंग की. इसके बाद आई वांट द परसेंटेज. सो हियर व्हाट आर द परसेंटेज 50. नाउ आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम हियर. तो ये सारी कोडिंग ना हम ना ही लेबल के ऊपर करते हैं ना ही टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर करते हैं. सारी जो कोडिंग होती है वो हमेशा बटन के ऊपर होती है. बटन के ऊपर डबल क्लिक करो और आपको जो भी कैलकुलेशन करना है जो कुछ भी करना है जो टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए वो आप टोटल जो भी बटन्स हैं उनके ऊपर क्लिक करके फिर कोडिंग विंडो में जाके उनके ऊपर कोड करो जैसे मैंने यहाँ पे किया. और उसके बाद रन करने के लिए यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और एरो पे क्लिक करने के बाद आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा. ओके नाउ लास्ट थिंग इज द लास्ट कोडिंग वी हैव डन ऑन अ exit button. On which button? Exit button. So just click on exit and you will come out of your while out of your project. Okay, so in this way we can design application in our Visual Basic. So this was the last second point of our chapter and the last point was how to exit from Visual Basic. This thing I taught you last week as well. I will tell you once again. Just go on a file and click on go in file menu and click on exit. You will come out of your Visual Basic window. So here we have finished our fourth chapter, that is Introduction to Visual Basic. I hope that all of you understood that how to create a project and how to work in it. This one is a project, so how to create a small project in Visual Basic. I have showed you small project. In this way you can create many projects in your Visual Basic programming language. So here we have completed our fourth chapter as well, and in exam I want you to I want 5 chapters. I want that 5 chapters should be there. So fifth chapter instead of 5th chapter I will be taking your 9th chapter. एक्स्ट्रा लेक्चर पॉसिबल हुआ तो लेंगे क्योंकि अब तक ना ही मेरा टाइम एडजस्ट हो रहा है ना ही आप लोगों का टाइम एडजस्ट हो रहा है. तो मैं हो सकता है कि मैं आपको एज द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा लेक्चर मैं आपको जो 9th चैप्टर है विच इज़ थेरोटिकल चैप्टर तो हो सकता है मैं आपको उसका वीडियो भेजूँ. ओके, बिकॉज दैट चैप्टर इज़ वेरी मच ईजी और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इजी है 9th चैप्टर. तो हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 9th चैप्टर लेंगे. 5th 6th 7th 8th ये चारों चैप्टर हम एग्जाम के बाद लेंगे, बट 9th वाला चैप्टर मैं आपका पहले ले लूँगी बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट थेरोटिकल चैप्टर एंड अ ईजियर चैप्टर. और ये वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों को नोट्स भी भेज रही हूँ इस चैप्टर के. सो यू हैव टू कंप्लीट दोज नोट्स इन योर नोटबुक एज वेल. जो नोटबुक चेकिंग को आने वाले हैं ऑन फ्राइडे in their notebooks all these 4 chapters should be completed. Okay guys, और मैं ये वीडियो इसलिए भेजा आप लोगों को क्योंकि कल आपकी नोटबुक चेकिंग है तो इसलिए पॉसिबल नहीं है आप लोगों का सबका लेक्चर अटेंड कर पाना. इसलिए इंस्टेड ऑफ अ लेक्चर मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग जूम लेक्चर मैं आपको ये वीडियो भेज रही हूँ. और वीडियो से प्रोग्राम भी अच्छे से समझ में आ रहा है. अगर हम ऐसे रेगुलरली लेते हैं तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है मेरे साइड से आपके साइड से और टाइम भी थोड़ा बहुत वेस्ट होता है. तो ऐसे प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इट्स बेटर कि हम वीडियो को रेफरेंस दें. ओके, सो guys, if possible do practice this project, this small do try to design this small project in Visual Basic on your computer or laptop and start studying from now. Okay, and while coming in school complete I want your computer notebook to be completed. Your computer notebook should be completed. Okay, so bye.